So dear students, this is the fourth experiment of Java in which we'll demonstrate how inheritance can be used in Java. Java रे inheritance केंती use करा जाए. Actually inheritance is a biological word. Okay, inheritance ର meaning होची गोटे क्लास रु बापा माँ गोटे छुआ जन्म नेला माने बापा माँ का प्रॉपर्टी छुआ पाक किसी आसला. ओके, बापा माँ जंती देखिया छुआ से देखिया बापा माँ का किसी नॉलेज छुआ पाक आसला. सो गोटे प्रॉपर्टी इनहेरिट हला, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गला पेरेंट टू चाइल्ड को, ताकू कहउचे इनहेरिटेंस बोली. सो एठी जावा जेतु गोटे क्लास बेस्ड कांसेप्ट, इनहेरिटेंस र मीनिंग होची गोटे पेरेंट क्लास थिला, सेठिरे तार किसी प्रॉपर्टीज अछि, सेठो आ गोटे क्लास क्रिएट कली, आ गोटे क्लास क्रिएट कली, ता कहली चाइल्ड क्लास बोली. ओके, so this is A, this is B. एटला तारी किसी properties अच्छी. So when a class is created from another class, आमे प्रथम बुझा inheritance का कुआ जाए प्रोग्राम जाबे करिया. जितले गोटे क्लास रोटे क्लास क्रिएट होउची, ता माने यार प्रॉपर्टी से नहीं के आसी, यार किस्टा प्रॉपर्टी से ता पाखु आणुची. पेरेंट क्लास प्रॉपर्टी ट्रांसफर हेगी चाइल्ड क्लास को आसुची, ताको इनहेरिटेंस बोली कुआ होची. जेमती जने बापा माँ ता पिला छुआ क्रिएट हेले बा जन्म हेले बापा माँ किस्टा बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी छुआ पाखु आसे. आम ताको बापा माँ देखाओ बापा भले देखाओ ना माँ भले देखाओ, बापा माँ किस्टा प्रॉपर्टी ता पाखु आसी. सो एठी भी सेमती प्रोग्रामिंग रे भी गोटे क्लास रु आ गोटे क्लास क्रिएट हेले ता प्रॉपर्टी ट्रांसफर के आ गोटे क्लास को आसीबो, ताको कुआ जाय कोड रीयूजेबिलिटी. कोड रीयूजेबिलिटी काहे कोड रीयूजेबिलिटी कुआ जाय, कारण यार जो कोडिंग ता एक क्लास रे अछि, एक क्लास ता रीयूज करा हला, मुता आउथरे ता लिखिया पड़लानी. आई डू नॉट हैव टू राइट डाउन द कोडिंग अगेन, मते आउथरे कोडिंग लिखिया पड़लानी. द कोडिंग्स आर ऑलरेडी रिटन इन दिस क्लास, दोज आर डिराइव्ड टू दिस क्लास. एक क्लास को आसिला आउथरे खाली बुझेला. आउ या पे जो प्रोग्राम लिखा जाए केंति लिखा जाए, एक्चुअली गोटे क्लास जदि क्लास ए अछि पेरेंट क्लास, सेथुर गोटे क्लास क्रिएट हबो, तबे आमे गोटे वर्ड यूज करू एक्सटेंड्स. एक्सटेंड्स गोटे वर्ड यूज करा जाए. एक्सटेंड्स वर्ड यूज करके आमे ट्रांसफर करि परिबा गोटे क्लास प्रॉपर्टी को गोटे क्लास प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करि परिबा. ओके, यदि ए गोटे क्लास अछि पेरेंट क्लास, बी गोटे क्लास अछि चाइल्ड क्लास, ताऊ पेरेंट क्लास कहि परिबा बा सुपर क्लास कहि परिबा, याको चाइल्ड क्लास कहि परिबा ना सब क्लास कहि परिबा, याको बेस क्लास कहि परिबा बा याको डिराइव्ड क्लास कहि परिबा. तर अलग ना सब अच्छी. पेरेंट रु चाइल्ड क्लास डिराइव होची, सुपर क्लास रु सब क्लास डिराइव होची, बेस क्लास रु डिराइव्ड क्लास डिराइव होची. एबे हम देखिबा केमिति क्रिएट होची. मोडे क्लास क्रिएट कली क्लास ए, तार कोडिंग लिखली क्लास ए, दिस इज द पेरेंट क्लास, तार कोडिंग लिखली. आ गोटे क्लास बी क्रिएट करिवि, क्लास बी टा कोठु आसीबो, क्लास ए रु आसो, क्लास लिखबी क्लास बी एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स ए, तार कोडिंग लिखी. लिखला माने या कोडिंग सहित क्लास बी कौन एक्सटेंड से माने क्लास बी एक्सटेंड है कि ए रु आसला, ए प्रॉपर्टीज नहीं कि आसला, तो माने क्लास बी इज क्रिएटेड फ्रॉम क्लास ए. तार मीनिंग है क्लास बी एक्सटेंड से मींस क्लास बी इज क्रिएटेड फ्रॉम क्लास ए. क्लास ए रु सेटा क्रिएट हेची, तेणु क्लास बी रा जदी मुड ऑब्जेक्ट क्रिएट करिवि ताल से क्लास ए रा सब डाटा को एक्सेस करि पारे. इट विल एक्सेस ऑल द डाटा फ्रॉम क्लास ए. सिमिलरली जदी आ गोटे क्लास सी क्रिएट करूची, यार ऑब्जेक्ट तैयारी करची, ताले ये बी हला तार पेरेंट क्लास, ए हला तार ग्रैंड पेरेंट क्लास, सेणु सी भी तार प्रॉपर्टीज को एक्सेस करि पारिबो. बुझेला. सो हमें जदी कोडिंग गोटे करिबा, गोटे सिंपल प्रोग्राम गोटे लिखिबा, तीनटा क्लास नबा, क्लास ए नबा, क्लास बी नबा और क्लास सी नबा. एटा हला चाइल्ड क्लास, एटा हला पेरेंट क्लास, एटा हला ग्रैंड पेरेंट क्लास. जेने छुआ ता बापा बापा ता जेजे बापा मा. बुझेला. क्लास ए रो गोटे सो ए गोटे आमे क्रिएट करिया कोन, गोटे मेथड क्रिएट करिया जहाँ भीतर किसी भी आमे लिखिबा इन क्लास ए जहाँ भी लिखिबा.
सेमती क्लास बी रे मोटे मेथड तैयारी करी सो बी ता भीतर किछ लिखिबी क्लास सी रे गोटे मेथड तैयारी करी सो सी ता भीतर किछ लिखिबी एबे जदि क्लास सी रो गोटे ऑब्जेक्ट तैयारी करी मु कहार क्लास सी रो जोटा चाइल्ड क्लास तार जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करी कारण क्लास ए रु क्लास बी तैयारी हला क्लास बी रु क्लास सी तैयारी हला मान लिखा हम क्लास बी एक्सटेंड्स ए क्लास सी एक्सटेंड्स बी बोली कहला दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस माने या प्रॉपर्टी एठी आसला या प्रॉपर्टी एठी आसला माने सी एबे क्लास बी रो प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर परिबो सी एबे क्लास ए रो प्रॉपर्टी भी एक्सेस करि परिबो सो दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस बोली कहौ छी सो इन यूजिंग इनहेरिटेंस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास कैन गेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ can get the properties of another class. So class C रो जो properties रहिला class C रो जो object रहिला it can access the properties of class B, it can access the properties of class A, it can access the properties of class C. निजर property access कर परिबो class B रो property access कर परिबो class A रो property access कर परिबो class C रो parent class हो जी class B, class C रो parent class भी class A तार grandparent class एटा बुझी होची. So when we will use so A for class A, so B for class B and so C for class C जदि एटी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करूची तामाने ए ऑब्जेक्ट यार डाटा मेंबर और मेथड कहार क्लास सी रा डाटा मेंबर और मेथड को एक्सेस कर परिबो सो को एक्सेस कर सो सी को एक्सेस कर परिबो सो बी को एक्सेस कर परिबो सो ए को एक्सेस कर परिबो यार मोटो होची मेन से जदि गोटे चाइल्ड क्लास रो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करूचे ताहले सीए तार पेरेंट क्लास रो डाटा को एक्सेस करि परिबो बा पेरेंट क्लास रो मेथड को एक्सेस करि परिबो सो ए सब जिंस को हमें टोटली एबे डेमोन्स्ट्रेट करबा यूजिंग द प्रैक्टिकल्स ओके सो डियर स्टूडेंट्स इन दिस प्रैक्टिकल सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द जावा इनहेरिटेंस concept. Inheritance is a concept where the properties of one class is inherited to another class. गोटे क्लास अच्छी पेरेंट क्लास से गोटे क्लास क्रिएटेड चाइल्ड क्लास सो चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट रो मेथड को एक्सेस करि परिबो बिकॉज एज इट इज क्रिएटेड फ्रॉम द पेरेंट क्लास इट विल एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट क्लास इट कैन एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास व्हाट आर द प्रॉपर्टीज आइदर डाटा मेंबर्स और द वेरिएबल्स और द methods those are used in the parent class those can be accessed to the child class. So now let us do it in practical. Okay, I'll zoom it in, go to file, new project. In the project window, Java and Java application selected, click on the next. Here we have to give the Java. I'll just zoom it out slightly bit. Okay, you can see here Java application 6. I will write down the name here, inheritance. This is the file name. I'll click on finish. Okay, so you can see here one file is created. That is inheritance, one file is created. Okay, so by clicking on the inheritance I have to create, actually I have to create 3 more classes, class A, class B and class C. I have to create 3 more classes. Okay, I'll just run it out once again. We will just system dot out dot okay, so see, I'll zoom it in and show you this is the inheritance package. By right clicking this, you will choose a Java class. Immediately class A, class A गोटे क्रिएट कली तापरे आ गोटे क्लास क्रिएट करी क्लास B बोली पुणी राइट क्लिक कली जावा क्लास और देली क्लास
B. Okay, finish. Now I will write down the coding inside the class A. Class A रो coding लिखुस देखो. गोटे आम मेथड डिक्लेयर करिया पब्लिक void show A. गोटे मेथड डिक्लेयर कली से मेथड कौन लिखी लिखिली सिस्टम डॉट आउट डॉट println I'll write down here in parent class A. Okay, in parent class A. Now I will go to class B. Class B is सेठी से लिखी भी. Just I will copy it down from here. Class B को जीबी. Class B रे एठी copy paste कर ली. एटा show B लिखी भी एठी. आउट ए क्लास आउट ए मेथड क्रिएट कर ली. इन लिखी child class B. Okay. So just see here. I have created two classes, class A and class B. This is class A. Inside the class A, I have written a method that is show A, in which I have written in parent class A. Inside class B, show B, I have written child class B. Now I will create a object, an object of class B. Class B, but child dot object create करे कोटी main class रे. I'll go to main class. I'll create an object here of class B. So लिख ली class B. Object के अंदर class B obj is equal to new class B. Okay, so object is created. Now I have to display the methods of both parent class and child class using the obj. So obj आमर parent class method कौन child class ला class B तार method ला show B parent class A तार method ला class A. So मैं show करची obj dot show B. Similarly obj dot show A. देखो this will show the error. What is the error here? You can magnify this. You will go here. It will show the error that the class inheritance is required here. The inheritance is required here because from a we have not used the keyword extend. Extend keyword हमें use करी नहीं. जब एक run करिवा हबनी हमें class B को जिबा लिखवा class B extends class A. So ठीक है class B टा create हला class A रू. Class B is created from class A. This will extend. So main को जिबा. Now it shows. The error goes. Okay. एबे जब तक मु run करूची. एबे मु तक run करूची. देखो output को आसुची. In class B, in child class B, in parent class A. देखो दीटा मेथड शो करची. फर्स्ट क्लास show B, second show A. So B ର आउटपुट आसी चाइल्ड क्लास B, so A ର आउटपुट आसी पेरेंट क्लास A. अच्छा so B टा कोन? So B टा लिखा हितला क्लास B भितरे. ओके इन चाइल्ड क्लास B. So A टा लिखा हितला क्लास A भितरे. किंतु ऑब्जेक्ट कहार क्रिएट कली? ऑब्जेक्ट क्रिएट कली मु देखडी क्लास B ର ऑब्जेक्ट तयारी कली. क्लास B ର ऑब्जेक्ट तयारी करी क्लास B ର मेथड को एक्सेस कली so B जोटा क्लास A ର मेथड एक्सेस कली जोटा so A. So एठी हमें बुझले जे objects of the child class, object of the child class B of child class. So object of the child class can access the data members and methods of the parent class and itself. Okay, so this is all about the inheritance. Inheritance use करी बुझले जे how the objects of the parent class or objects of the child class access the properties and the methods of a
parent class, and the code can be reused there. So thank you very much for the class.